It's the two title contenders going head to head at Anfield. It's Liverpool versus Arsenal, and I can't wait to get it all started. So welcome back to my channel, The Marching Reds. मैं हूं अमन चीमा और इस वीडियो में मैं प्रीव्यू करूंगा द गेम बिटवीन लिवरपूल एंड आर्सेनल टू बी प्लेड एट एनफील्ड ऑन दिस संडे and I can't wait for it. Let's start right away. Liverpool and Arsenal का form same है in terms of getting two back-to-back wins heading into this game. Liverpool की बात करूं तो they won 4-2 against Bournemouth and 3-2 the last minute winner against Newcastle. Arsenal उनका पहला मैच काफी ट्रिकी था अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे दे केम आउट ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड विद अ विन 1-0 and they battered Leeds at home. So I mean it's very tough to say कि कौन सी टीम बेटर है because जहां पे आर्सेनल ने 2 क्लीन शीट्स लेके यूनाइटेड पे लाइक अवे यूनाइटेड फिक्सचर पे जीत कर आए हैं एंड देव showed their dominance at in Leeds sorry against Leeds at home. उसी के साथ साथ लिवरपूल हैव नॉट लुक्ड एट देयर menacing best, but उसी के साथ साथ they found ways to win the game and it's all building up to become a fascinating contest. उसी के साथ साथ लिवरपूल इस हफ्ते काफी इंजरी फ्रेंडली रहा है उनके लिए इन टर्म्स ऑफ हमें तो पता ही था कि फ्रिम्पोंग आउट है बट कॉनर ब्रैडली गॉट सम मिनट्स अगेंस्ट न्यूकासल सुना जा रहा है कि एलेक्सिस मैकलिस्टर इज बैक इन कंप्लीट ट्रेनिंग सो देयर आर पॉजिटिव साइंस प्लेइंग 11 की बात करूं तो the concerns would be the same as we faced against Newcastle कि right back पे कौन शुरुआत करेगा and how the midfield is going to look. I would personally start with let's start with the goalkeeper again. Alisson has to start. Right back पे I will not be surprised if I see Dominic Szoboszlai starting again, but I definitely see Connor Bradley getting more minutes. अगर वो second half substitute भी होता है, I can see him coming on as early as maybe 45 or 46 minutes as soon as the second half starts, or maybe at 60 minutes, not like 70-80 minutes जब like वो न्यूकासल के टाइम आया था. उसी के साथ साथ सेंटर बैक पेयरिंग कोनाटे has looked shaky, but ऐसे टाइम पे you have to back the man. Virgil, clinical against Newcastle, he has to start, the captain for our team. Left back पे again Kirkes, I know बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि रॉबर्टसन को खिलाया कर्केस को खिलाया, but I feel Kirkes should start because ये अभी काफी अर्ली है इन द सीजन टू एक्सपेक्ट कि करके शुड बी गिविंग मैच विनिंग और क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस सो अभी आई एम नॉट डाउटिंग हिज पोजीशन इन द 11 इन द मिडफील्ड ग्रेवनबर्ग it's so finally nice to name him in the 11 and given the fact that he also scored in the Newcastle game should add up to his confidence and everything so Gravenberg in number 6 उसी के साथ साथ I think instead of Curtis Jones Alexis McAllister would start this game given the fact that he has trained the whole week Florian Wirtz some people might argue that he's not performing at his best level but again same as Kirkes same as all the new signings they need time to embed into this team. They need time to gel into the new tactics and the new formation that Liverpool is playing with. पहले हम लोग 4-3-3 खेलते थे. अभी 4-2-3-1 खेल रहे हैं. Like I know some would argue that like last season भी हम लोग 4-2-3-1 technically खेल रहे थे या फिर 4-2-4 खेल रहे थे. But I would be backing Wirtz in this big game because I'm not expecting a lot of goals from him. Of course, if he gets it, wonderful. But he would be that key player जो कि creatively can unlock defenses and we know Arsenal की defense कितनी watertight है. So Gravenberg, McAllister, Florian Wirtz and again attack picks itself. Mohamed Salah like कुछ ना दिखते हुए भी पूरे 2 games में he got an assist, he got a goal. Hugo Ekitike, top form. I won't be surprised that if he plays 65 minutes again, if he can give in a 75-80 minute performance, that would be the next step in his development. Cody Gakpo, fresh of signing from a new long-term contract, should begin at the left wing position. सबसे बड़ी चीज क्या होगी इस गेम में आई फील मिकेल आर्टेटा ने फाउंड आउट कर लिया है कि लिवरपूल की डिफेंस अभी के हिसाब से उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वो लास्ट सीजन दिख रही थी एंड दे कैन गेट एट देम इन द ट्रांजिशन फेज और जो सबसे डेंजरस चीज होने वाली है उनके सेट पीसेस बिकॉज हमें पता है कॉर्नर्स पे फ्री किक्स पे आर्सेनल ने 1-2 साल में अपना ही एक अलग लेवल रीच किया है एंड जैसे लिवरपूल ने ये सीजन स्टार्ट किया इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड डिफेंडिंग दोस पर्टिकुलर ट्रिकी सिचुएशंस
we've not looked good. And I won't be surprised if I see a lot of corners or like a lot of free kicks being given to Arsenal, जिसमें उन्हीं का हाथ होगा कि यार अगर हम लोग नॉर्मल प्ले में अटैक नहीं कर पा रहे, जस्ट गेट दोस फ्री किक्स, जस्ट गेट दोस कॉर्नर्स, एंड देन वहां से दे कैन डोमिनेट. तो वहीं पे इफ Konate can have a nice game with Van Dijk, that would be an that would be a perfect game for us because Virgil got his form back against Newcastle, but Konate still has not been giving those 8 on 10 performances. He's still been like very shaky and like very underconfident, if I can say so, like not knowing what to do at what exact times. But again, he's been there for us when we needed him the most in the past seasons, and I back my man to be giving a clinical performance once again when we ask for him. प्लेइंग 11 डिस्कस कर लिया, डेंजरस थ्रेट्स डिस्कस कर लिए. अब जहां पे मैं देख रहा हूँ कि गेम कैसे शेप अप होगा, आई थिंक एनफील्ड हैज टू मेक इट सेल्फ नोन. नॉट सेइंग कि भाई उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, बट आई फील एनफील्ड एंड द क्राउड विल प्ले अ बिग बिग रोल in making sure that champions feel like champions, and the Arsenal team knows that they are facing the champions at the champions home. उसी के साथ साथ in terms of fluidity and attack, you can see those glimpses of like Gakpo and Ekitike linking up together really well. And सबसे बड़ी चीज क्या रही है, मिडफील्ड और डिफेंस का कोऑर्डिनेशन, जो कि लास्ट के एक दो मैचेस में नहीं रहा, जिसकी वजह से लाइक वी कंसीडर्ड 2 goal लीड्स इन बोथ द प्रीमियर लीग गेम्स. एंड आर्सेनल इज वन ऑफ दोस टीम्स जिसके खिलाफ आप बस अपनी डिफेंस को लॉकडाउन करना चाहोगे, एंड एक बार आपने एक अच्छी पोजीशन ले ली, यू जस्ट वांट टू make sure that you are not conceding even one bit of the grass to them, not because Arsenal is a good team, but they are your potential title contenders. So again, it is heating up to become a great game. And yeah, I'm expecting a Liverpool win because it's at Anfield, and if we can win against a title competing team early on in the season, not only आप पहली इंटरनेशनल ब्रेक में ऑन टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड जाओगे, बट जो टीम हारेगी, दे विल बी ऑलरेडी इन दैट कैच अप मोड फेज कि यार हम लोग उनसे हार गए हैं, वी विल फेस देम ओनली वंस मोर इन दिस सीजन. सो we'll have to be at it right from September, like as the games begin back. So yeah, I mean in terms of midfield rotation, uh, I think Gravenberch, McAllister और Florian Wirtz का होना would be just the perfect midfield for us. उसी के साथ साथ if Dominic Szoboszlai, like similar in the Newcastle game, can push forward depending on like when Connor Bradley gets the nod, that would be another facet that we can explore, because that is what worked well for us against Newcastle. Because I know वो 10 man में चले गए थे, but जब Dominic Szoboszlai आगे गया, he forced the last man or the last Newcastle defender towards him, जिसकी वजह से रियो के पास स्पेस हुई, and then he scored the winner. And our substitutions have been great. Chiesa against Bournemouth getting the match-winning goal. Rio Ngumua, I'm getting better at pronouncing his name. He came on off as a substitute, and then he got the match-winning goal. जरूरत पड़े, I know we can turn up a notch when it needs to be, but I genuinely hope that ऐसी situation ना आए, we start dominating from the very first whistle. उसी के साथ साथ I understand that there will be patches in the game where Arsenal will be dominating, and वहां पे we have to show the resilience that we showed in a tough fixture at Newcastle at their home ground. So I just hope we get all the positives from both the games, and सारे वो positives अगर हम लोग इस गेम में दिखाना शुरू कर दें, it would be just another step in this young team, in this youthful team who is still adapting to all the changes, which is not easy. I mean, लोग बोलेंगे कि यार हाँ चैंपियंस हो, इतने पैसे खर्च लिए, तो तुम्हारे लिए तो वॉक ओवर होना चाहिए. बट गाइज, आपने अगर थोड़ा सा न्यूज देखा होगा, मोहम्मद साला हिमसेल्फ considers Arsenal to be the number one favorites for this year's title, because he only said in his interview the fact that Arsenal के पास 5-6 साल से मैनेजर सेम है, टीम सेम है, familiarity है, और वहीं पे Liverpool and City are changing a lot of things in terms of their team dynamics.
टीम स्क्वाड, लाइक बहुत सारे इन्स एंड आउट्स हो रहे हैं. सो आई मीन, मैंने भी जैसे अपने पिछले वीडियोस में कहा है कि दिस टीम नीड्स टाइम, एंड एक बार एक क्लिक इन होना शुरू हो जाए, देन इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच फॉर देम. बट टिल दैट पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रिजल्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज करें. सो रिजल्ट्स दो प्रीमियर लीग मैचेस में तो आ ही रहे हैं, बट अगर इस मैच में भी रिजल्ट आ जाए, उसी के साथ साथ अगर परफॉर्मेंस भी एक स्टेप ऊपर आ जाएगी, इट वुड जस्ट बी आइसिंग ऑन द परफेक्ट ऑगस्ट मंथ, जो कि एक एस्ट्रिस्क पे होगा, बिकॉज वी लॉस्ट द कम्युनिटी शील्ड गेम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. बट yeah, this is what I'm expecting from the game, and I really hope we see more of Wirtz, more of Salah, and if not more of them, but the more clinical side of them whenever they get the ball. And I'm expecting a 3-1 win, like 1-0 win bhi chalega, 2-1 win bhi chalega, but at least a win for Liverpool. Do let me know in the comment section on how you think this game will pan out. Do you think Arsenal will defeat Liverpool at Anfield, or do you think जो भी हुआ है, when it comes to Anfield, Liverpool will be at their best, or at least Anfield will make sure that Liverpool goes home with 3 points? If you've liked this video, do let me know in the comment section, and also by liking this video. And I hope I can welcome you to my community, and I hope you subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, take care.